Welcome to Mastery of English. Please don't forget to like, comment and subscribe our channel for more updates. Welcome to Mastery of English. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमने अपनी पिछली क्लास में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। वी हैड स्टडीड अबाउट एडजेक्टिव्स एंड इट्स एंडिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आज हम एडजेक्टिव्स की काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। सम एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नाउन्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स को कि कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो हियर इज सम एग्जांपल्स। वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट एग्जांपल, अ कोल्ड ड्रिंक। A cold drink, a cold drink. Here word cold is adjective and it is describing the quality of noun. A hot bun, hot bun. Which kind of bun? Hot bun, a hot bun. An ugly monster, an ugly monster. A fierce dog, a fierce dog. Here are some other examples as well. A loud crash, a loud crash. Which kind of crash? A loud crash. A beautiful rainbow, a beautiful rainbow, beautiful rainbow. Next है a clever monkey, a clever monkey. A difficult question. Happy children, a kind lady, a new car, an old house, an old house, a pretty girl, a rich family, a sad story, a strong man, a wicked queen. So these are the examples of adjectives, and according to the kinds of adjective, these are the qualities adjectives. So some adjective tells you which place or country a person or things come from. कुछ adjectives ऐसे होते हैं जो आपको ये बताते हैं किसी शख्स के बारे में या चीज के बारे में कि वो कहाँ से आई है और belong to या इसका तल्लक कहाँ से है। They are called adjectives of origin. यानी कि फर्स्ट हमने जो adjective पढ़ा उसमें हमने qualities adjective पढ़ा। तो अभी ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा जो कि नाउन्स की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन है, यानी कि जो हमें ये बताते हैं कि कोई शख्स या चीज कहाँ से उसका ताल्लुक है या कहाँ से आई है। फॉर एग्जांपल, चाइनीज कंग फू, एन इंडियन टेम्पल, अ मैक्सिकन हैट, डच क्लॉथ्स, अ फिलिपिनो शर्ट, a Filipino shirt, a Filipino shirt. Australians apples, a Balinese dancer, the English language, the French flag, an Italian car, a Japanese garden, a Scottish kilt, Thai boxing. So these are the adjectives which called the adjectives of origin, because these adjectives describe about a person or a thing comes from. So next we are going to discuss about the adjectives that tell us about the color of a things. Some adjectives tell you color of things. कुछ adjectives ऐसे होते हैं जो आपको चीजों के रंग के बारे में बताते हैं। For example, please get me some white paint. Which kind of paint? White paint. White. White. Here white is an adjective. The sky is grey. The sky is grey. The sea is blue. George is wearing brown shoes. I don't like green apples. Carrots are orange. Flamingos are pink. Eggplants are purple. Roses are red. Your hands are black. Your hands are black. So some adjectives tell you the size of the nouns they describe.
कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि नाउन के साइज के बारे में हमें बताते हैं। A huge balloon, a huge balloon. A fat sumo wrestler, a fat sumo wrestler. A thin boy, a thin boy. A short man, a short man. A big shirt, broad shoulder. A high mountain, a large ship. A long bridge, a low ceiling. A narrow path, small animals, teeny insects. A wide street. So here is a grammar tip that the word tall describes peoples and narrow upright objects. जो tall का adjective है, ये बेसिकली हमें उन लोगों के बारे में या उन narrow upright object के बारे में बताता है कि जो के पतले हों। For example, you can say a tall girl, यानी कि a tall girl एक लंबी लड़की। A tall bookcase एक लंबा bookcase। The word high describes bigger or wider objects that reach a great height. और जो word high है ये उन objects को बयान करता है जो बड़े होते हैं, जिनका हुजम बड़ा होता है, और उनकी हाइट भी काफी लंबी होती है, ज्यादा लंबी होती है, लेकिन वो हुजम के लिहाज से वो नैरो नहीं होते, दे वाइडर होते हैं, चौड़े होते हैं। तो अगर नैरो हो तो उसके लिए हम टॉल का वर्ड यूज करते हैं, और अगर जो है वो बिगर और वाइडर ऑब्जेक्ट्स हो तो उनके लिए हम हाई का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से अ हाई माउंटेन, अ हाई वॉल, अ हाई वॉल। सो some adjectives are there which describes about the numbers, and these adjectives are called adjective of quantity. Numbers are adjectives too. Number भी जो हैं ये भी adjective होते हैं। They tell you how many people, animals or things there are. ये आपको बताते हैं कि वहाँ पे कितने शख्स हैं, कितने जानवर हैं या कितनी चीजें हैं। Sometimes they are called adjective of quantity. कभी कभार इनको adjectives of quantity भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू प्रिंसेस, 3 princes, 4 mermaids, 5 witches, 1 giant, 7 elves, 6 fairies, 9 dwarfs, 8 puppets, 10 angels. So 11 hens, 12 geese, 13 birds, 14 mice, 15 frogs, 16 snails, 17 kittens, 18 ants, 19 lizards, 20 butterflies. So these are called the adjectives of quantity. So other adjectives tell you something about quantity without giving you the exact number. कुछ adjectives ऐसे भी होते हैं जो कि हमें exact number के बारे में नहीं बताते, लेकिन वो एडजेक्टिव होते हैं, वो किसी चीज के बारे में बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में, लेकिन एग्जैक्ट नंबर फिगर जो है वो हमें नहीं बताते। फॉर एग्जांपल, सम सोल्जर्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ फ्यू कप्स, अ फ्यू पपीज, अ लिटिल आइसक्रीम, अ लिटिल राइस, नॉट मैनी पीपल, टू मच सॉल्ट, लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, प्लेंटी ऑफ मनी, some food, is there any milk? So adjectives that tells you about quantity are also called quantifying determinants. So ऐसे adjectives जो आपको quantity के बारे में बताते हैं, these are also called quantifying determinants. So नाज़रीन, आज हमने adjectives की kinds के बारे में पढ़ा कि adjectives की kinds कौन कौन सी होती हैं और किस किस चीज को ये रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें हमने एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन को पढ़ा, उसके अलावा हमने क्वालिटीज ऑफ ऐसे एडजेक्टिव्स को पढ़ा जो कि नाउन्स की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।
Thank you for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe our channel for more upcoming informational videos. Thank you for watching. Please don't forget to